Dear students, as we have discussed the tale of two birds, now we shall do the exercise. First of all, I repeat the lesson which we have discussed before, that the two baby birds lived with their mother in a nest in a tall and shady tree. One day there was a big storm with thunder, lightning, and rain. A big heavy branch hit the nest and killed the mother bird. The strong wind blew the two baby birds away to the other sides of the forest and separated them from each other. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्टोरी है एक माँ और दो बच्चों की। जो बर्ड्स होते हैं, जो परिंदे होते हैं, तो वो एक जंगल में रहते हैं, एक घोंसला बना के। एक रात को एक ऐसा तूफान आता है हवा का, जिसकी वजह से बहुत लाइटनिंग होती है, रेन होती है, तो बादल गरजते हैं, तो बहुत बड़ा तूफान आता है। अचानक एक बहुत बड़ी टहनी गिर के उनके घोंसले पे पड़ती है, तो उनका घोंसला टूट जाता है और उन बच्चों की जो माँ होती है वो मर जाती है। तो हवा के झोंके से वो जो उसके दो बच्चे होते हैं, वो दूर कहीं दूसरी जगह जाके गिर जाते हैं। बच तो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा जो होता है, वो एक गार के आगे, जो बदमाशों चोरों की गार एक होती है, तो वहाँ वो रहते होते हैं, उनके आगे जाके गिरता है। तो वो वहीं रहना शुरू कर देता है। और दूसरा जो बच्चा होता है, वो एक साधु की जो एक उसका घर होता है, एक साधु की झोंपड़ी जो होती है, उसके आगे जाके गिरता है, तो वो अपना रहायश वहीं बना लेता है। तो जो रॉबर्स के आगे गिरता है, वो उनके माहौल में मिक्स हो जाता है, और जो साधु की झोंपड़ी के आगे गिरता है, वो वहाँ का माहौल अख्तियार कर लेता है। तो इसके बाद जब हमने ये लेसन पढ़ा और समझा, तो अब हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। तो जो छोटे बच्चे दो थे, वो कैसे एक दूसरे से अलग हो गए। तो इसका जवाब ये है, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन देयर mother in a nest in a tall and shady tree. One day there was a big storm with thunder, lightning, and rain. A big heavy branch hit the nest and killed the mother bird. The strong wind blew the two baby birds away to the other sides of the forest and separated them from each other. So its next question is, where did each of them find a home? तो उन दोनों ने अपना अपना घर कहाँ ढूंढा, कहाँ पाया उन्होंने। The answer is, one of the baby birds came down near a cave where a gang of robbers lived. The other baby birds landed outside a rishi's ashram a little distance away. Thus they found two different homes. The third question is, what did the first bird say to the stranger? Answer is, the first bird
saw the stranger, that was the king. He called the robbers to come quickly and rob the king of his jewels and his horse. The bird had indirectly warned the stranger of this consequence of staying near the queue. Fourth question is, what did the second bird say to him? So the answer is, the second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to go inside the ashram, take some rest and make himself comfortable. He further added that the first bird was his brother who had made friends with the robbers, so he talked like them. It was the fourth question. The fifth question of the lesson is, how did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? The king was surprised about the difference in behavior between the two birds. The Rishi explained that the first bird imitates the same words that he heard from the robbers, whereas the second bird repeats the words that he had always heard at the ashram. This was the difference between the two birds that were the brothers. First bird imitate like robbers, and the second bird imitate like the priest of the ashram.